बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट्स ईन्स एंड इनॉन्स। यानी ईन्स एंड इनॉन्स जो है इन बेसिकली यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो उसमें कौन सा ट्रांजिशन डोमिनेंट होता है और उस ट्रांजिशन पे डिफरेंट फैक्टर्स का जो है क्या रोल वहाँ प्ले हो जाता है, वो कैसे वैरी हो जाता है। इट्स नॉट फ्रॉम द मैकेनिकल परस्पेक्टिव लाइक जैसे मैकेनिज्म में देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ ईन्स पे कैसे रिएक्शन होती है। नो, हियर वी आर डीलिंग स्पेसिफिकली विद द एब्जॉर्प्शन, यानी लैम्डा मैक्स कैसे वैरी हो जाता है इनमें और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कैसे वैरी हो जाते हैं। नाउ सो स्टार्ट द ईन्स। तो ईन्स बेसिकली एज द वर्ड सजेस्ट्स इट इज ENE, it is basically the alkene, those compounds where we have a double bond present, alkenes, and the simplest alkene is ethylene molecule. So enes means it is we have double bond present, alkene. As we know, जैसे हमने पहले कहा था कि इनमें ये सिग्मा बॉन्ड होता है, this is pi bond, और सिग्मा बॉन्ड is a stronger bond, electrons are tightly held. उनको एक्साइट करने के लिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट दिस पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली loosely held. It's a weaker bond than pi bond, so you can easily excite electrons from pi bonding to pi anti-bonding orbital. Why it is that? Because pi bonds जो है they are formed through the lateral overlap. So because of that lateral overlap condition, it's easy to excite the pi electrons. तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो ट्रांजिशन है, एक तो पाई बॉन्ड की वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और सिग्मा की वजह से सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और बाकी ये भी सिग्मा बॉन्ड्स है. सो दिस इज अ हाई एनर्जेटिक ट्रांजिशन, सो इट विल नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. सो द मेन ट्रांजिशन इन द ईन्स दैट्स पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. तो हम लोग डिस्कस करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. तो अल्कीन्स में द हाई एनर्जी, दिस इज द low wavelength transition or the dominant transition, a characteristic transition, that is pi to pi star, that is pi bonding to pi anti-bonding. यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमें बैंड आता है, that is basically due to the transition of electrons from pi to pi star energy level. So these are called the enes. enes में जैसे हमने पिछले एक दो क्लास में भी बीच में डिस्कस किया, simplest member is ethylene molecule. इथिलीन मॉलिक्यूल, इसका लैम्डा मैक्स जो है, सो डू लाइक दिस, इसको हम मॉलिक्यूल रखेंगे, दिस इज लैम्डा मैक्स. सो दिस इज इथिलीन, इट्स लैम्डा मैक्स इज अराउंड, जैसे हमने कहा था, इट्स यूजुअली अराउंड 175. Now, अब मैं इस इथिलीन को जो है, I will make another molecule of it. I will add one more ethylene in it, but that should be in the conjugation. अगर ये बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं हो, अगर ये दो बॉन्ड्स की बात हो, हमारी मिसाल के तौर पर, अगर you have this type of, there are two bonds, but they are separated by two bonds. So they will behave individually. They will not behave in the conjugation. Now here we have a conjugation, alternate single and double bonds. So these, they are basically involved. These alternate single and double bonded compounds. वो तीन भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर इसके बाद single bond फिर double bond, तो उसका hexatriene. These type of compounds will come in this ene series. So not this type of compounds. So we are talking about the alternate single and double bonded compounds. So we'll take another family of it, that is, this is another class of compounds, butadiene. Butadiene. So 1,3-butadiene. This is ethylene या alkene. इसका लैम्डा मैक्स होता है अराउंड 270 नैनोमीटर्स. तो क्लियरली जो ईन सीरीज है जहाँ पे हमारे पाई बॉन्ड दे आर conjugated, दैट मीन्स जितना आप एक डबल बॉन्ड बढ़ाते जाओगे द लैम्डा मैक्स गोज एंड इंक्रीजिंग. फाइन. इसी तरह से हमने देखा और एक एग्जांपल विटामिन ए में, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आई विल राइट विटामिन ए.
इस लेवल के लिए you need not to worry about vitamin E structure. Vitamin E, it has 5 double bonds in conjugation. In conjugation. So जब 5 double bonds in conjugation, तो obviously lambda max will be higher than this. That's around 234 nanometers, 235. तो जितना हम डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में इंक्रीज करते जाएंगे, lambda max will shift towards the higher wavelength side. That means now it becomes easy to excite the electron from this pi to pi star. So this phenomena जो हमने कहा था कि wavelength shift होना higher wavelength की तरफ because of an effect that's called as bathochromic shift. So this was the situation in the pi compound. So basically what happens is that अगर आपका initially this is your pi to pi, दोबारा हम डिस्कस करेंगे, पहले भी हमने बोला था. So this is your pi to pi star in ethylene molecule. So in the next molecule you have something like this. So the gap is going down, the next molecule gap is like this, and so on. So it's basically, since both these, so it's basically this anti-bonding energy is coming down and this is going up. Overall it results in lowering of the gap. So more double bonds, they result in reducing the energy gap between the pi and pi anti-bonding. So that means if energy gap कम है तो it requires lower energy for electronic excitation. That means it will absorb at the higher wavelength side. So this was the case of Enes. अब Enes में और भी कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए Enes में और भी कुछ होता है. फॉर एग्जाम्पल Enes दो टाइप के हो सकते हैं. एक ही ऐसा हो सकता है. Enes में फॉर एग्जाम्पल विल टेक दिस ब्यूटाडाइन, ये फर्स्ट मेंबर. तो ब्यूटाडाइन ऐसे हो सकता है. इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो दोनों बॉन्ड्स है दे विल बी इन लाइक अ ट्रांस फैशन. देखो ट्रांस है ना, एक ये इस बॉन्ड की ये साइड में. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांस. ऐसे कंपाउंड को ट्रांस Enes कहते हैं या ट्रांसॉइड कंपाउंड्स. ट्रांसॉइड, सो इट्स कॉल्ड एज अ ट्रांसॉइड, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्म. ऐसा भी हो सकता है कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म, और इट कैन बी लाइक दिस. So दोनों double bonds on the same side, so it's called a cis form or schizoid form. Cis form or schizoid form of butadiene. तो ये हो सकता है, ये जो butadiene है इन वाला कंपाउंड, ये cis form भी हो सकता है और trans form में हो सकता है. और sometimes ये भी होता है कि it can be, now यहाँ पे तो हमने देखा ये किसी रिंग में नहीं है. If it is present in a ring, so that's called as a cyclic form. तो हम इसको साइक्लिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन का दे रहा हूँ. तो ये भी दिस इज टाइप ऑफ सिजॉइड, क्योंकि इधर फॉर्म बट इट इज साइक्लिक फॉर्म. ये ऐसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अच्छा, साइक्लिक फॉर्म का जो लैम्डा मैक्स है, देखिए ये ब्यूटाडाइन यूनिट है ना यहाँ पे, तो ब्यूटाडाइन फॉर्म. अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इट्स अ ब्यूटाडाइन रिंग के अंदर. Its lambda max of this compound is around 253 nanometers. अब देखिए it can be in this form also. बहुत possibilities है. अब यहाँ 6 membered ring है. I will make it 5 membered. ring. यहाँ lambda max जो है, यहाँ भी देखिए butadiene. So the lambda max absorption maximum, it will get lower, that is 228. तो इससे भी फर्क पड़ता है absorption पे. इसी तरह से it can be a 7 membered ring.
is 7-membered ring group. Fine. Cycloheptadiene is cyclopentadiene. The lambda max, that's around 241. तो इसमें भी लैम्डा मैक्स इसके कंपेयर में कम है, लेकिन स्लाइटली बेटर देन दिस ओब्वियसली, क्योंकि इसमें थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा आ जाता है. 6-membered में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है मॉलिक्यूल की बिकॉज ऑफ वो स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन. तो यहाँ एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा इसके कंपेयर में बहुत थोड़ा है, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लैम्डा मैक्स बहुत कम हो गया इसमें. फिर भी कंपेयर टू दिस बेंजीन इट्स मोर स्टेबल, दिस 6-membered टाइप. तो वी हैव लैम्डा मैक्स 241. तो ऐसे आपका जो है इन कंपाउंड्स हो सकती हैं, और इनमें जो पाई टू पाई ट्रांजिशन विल गेट वेरिड अकॉर्डिंगली. नाउ तो इस लेवल के लिए जनरल हो गया. इसमें और भी हम पढ़ेंगे थोड़ा जब हम व्हेन वी गो टुवर्ड्स द कैलकुलेशन ऑफ वुडवर्ड-फाइजर रूल में हम जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे वहाँ हम और पढ़ेंगे. नाउ सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड जो यहाँ पे है खास करके इस लेवल पे, दैट इज इनॉन कंपाउंड्स. तो इनॉन जैसे यहाँ पे हो, आप इसको पढ़ सकते हो. इट इज इन प्लस ऑन. इट इज बेसिकली कीटोन. इट इज इट कैन बी, दिस इज अल्कीन. अल्कीन का लास्ट पार्ट अल्कीन प्लस इट इज इट कैन बी कीटोन और इट कैन बी एनी एल्डिहाइड. ये वाला यानी a compound where we have this unit present and we have this unit present. So compounds where have this and this unit present and they are in conjugation. Conjugation. तो यहाँ पे यूजुअल स्पेक्ट्रोस्कोप में इनॉन से जो हमारा इंटरेस्ट इनॉन्स का होता है, दैट इज व्हेन वी हैव अ डबल बॉन्ड and a carbonyl group based compound, they are present in conjugation. So this is what we mean by enones here in the usual spectroscopy. तो enones में alkenes का तो हो गया. Now enones में how this gets, this is electron transition कैसा होता है. जैसे enones में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें जो ट्रांजिशन होता है दैट इज पाई टू पाई स्टार. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ लोन पेयर भी है. तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है दैट इज योर डोमिनेंट ट्रांजिशंस. और एक तो आपका पाई टू पाई स्टार होगा ही होगा, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दैट्स अ हाई एनर्जेटिक ट्रांस. दूसरा है लोन पेयर की वजह से एन टू पाई स्टार पे. तो यहाँ दो ट्रांजिशन ओवरऑल अगर हम इसको मिला के लेंगे, सो दैट मीन्स इन द इनॉन्स the types of transitions which are dominant, that is one is n to pi star and as well as pi to pi star. ठीक. So this enone, ये बहुत it can be in a different forms. For example, it enone can be like this. ये ऐसे हो सकता है. So enone ऐसे भी हो सकता है. यहाँ मान लो आपका इट वाज कीटोन, यहाँ आपका अल्डिहाइड है. सो इनोन आपका भी ऐसे भी हो सकता है. कॉन्जुगेटेड की बात मैं कहता हूँ, दैट मीन्स इनका जो डबल बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इनका. ये इसको हम अल्फा बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर उसको बीटा. बोथ आर इन कॉन्जुगेशन विद दिस, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सो दैट कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स. सो इनोन्स कैन बी कॉल्ड एज, they're basically alpha beta unsaturated carbonyl compounds. So they're basically the alpha beta. They're basically the alpha beta unsaturated carbonyl compounds. Enones. Enones, fine. So there are alpha beta and saturated compounds. जैसे हमने पहले भी कहा कि कार्बन अल्कीन्स में जो हमारा मेन टॉपिक डिस्कशन किया, दैट इज इन अल्कीन्स द डोमिनेंट ट्रांजिशन इज पाई टू पाई स्टार, इन कार्बोनिल कंपाउंड द डोमिनेंट ट्रांजिशन इज एन टू पाई स्टार. ये वाला लो एनर्जेटिक ट्रांजिशन. ठीक है ना.
जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था, नाउ विल गो टू देयर यूजेबल स्पेक्ट्रल बैंड। हमने बोला था कि अगर आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है प्रेजेंट है, दिस ट्रांजिशन इन polar solvent, it results in a red shift. That means अगर एक कंपाउंड लेंगे जिसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन है, या अल्कीन लेंगे, तो उसका जो लैम्डा मैक्स होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, फिर पोलर सॉल्वेंट में देखेंगे तो डिफरेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट वेवलेंथ विल बी हायर, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। लाइकली अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखेंगे इन पोलर सॉल्वेंट्स, इसका केस रिवर्स है, तो इट वाज एक्चुअली ए बिलीव शिफ्ट। इसको हमने हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा था, वाला जिसको हमने कहा था पैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसको बिलीव शिफ्ट हमने कहा, यानी नाउ द एनर्जी गैप इज इंक्रीजिंग बिटवीन एन एंड पाई स्टार, यू रिक्वायर लार्जर एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स कॉल्ड एज अ बिलीव शिफ्ट। तो ये सेम हैपेंस इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड दिस। इसमें जो दो ट्रांजिशन है, अगर इसको आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो फिर पोलर सॉल्वेंट लेते हो, ये दोनों बैंड्स विल ट्रांजिट अकॉर्डिंगली। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन है कि जब हम दोनों को जो है विल पुट देम इन द कॉन्जुगेशन, सो नाउ when we'll put both in the conjugation, now let's take an example. So they're behaving as usually fine. Now we'll take a, this is not working, problem. Now let us say this is a carbonyl compound, alpha beta enone, en plus on. So we have here, because of this functional moiety present in the molecule, so it is one of the bands is pi to pi star. Because of this functional moiety present, it is dominant transitions n to pi star. So मतलब दो बैंड्स आ जाएंगे, यानी अगर हम स्पेक्ट्रम देखेंगे इसका, देखो मैं रफ स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इट इज एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। तो you have two types of bands present, दो बैंड्स में आते हैं। So this will be one band at some wavelength, roughly बना रहा हूँ, one band another wavelength. So this may correspond to one function. For example, अगर हम इनका आइडियल वैल्यू लेते हैं, आइडियली इसका होता है, आइडियली जो हमने बोला था, (170) लैम्डा मैक्स, और इसका होता है that is this n to pi star transition carbonyl. So you have 170, you have this bond that is pi to pi star transition because of pi to pi star. So this is your because of n to pi star. So आपके दो बैंड्स आ रही हैं कॉन्जुगेट कंपाउंड। लेकिन जब ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, ये तो इंडिविजुअल था when they were not in the conjugation, when both these functional groups are coming in conjugation, so this transition is also getting affected. हमने कहा था because of conjugation there's delocalization. Because of that delocalization, it is easy to excite the electrons, so your absorption becomes easier. That means wavelength of absorption is higher. तो ये band भी because of conjugation is also getting affected, so it is going from 170 to, जब ये easy है, that means larger wavelength, it goes to 210 around and 230. So clearly it is a red shift, it's a bathochromic shift, क्योंकि अब electrons को because of delocalization, because of the conjugation, जैसे ये conjugation, तो ये flow होता रहता है from one electrons from, फिर ये वापस from one side to other side, from one atom to, it's called delocalization. अब easy हो जाता है transit of electrons, so it's going shift from 170 to 210 and 239 meters where it is in conjugation. Same is the case when carbonyl group is there in the conjugation. Earlier it was 290. Now because of conjugation it will shift towards the, is a higher wavelength, 310, 330.
So this is also bathochromic shift and this is also bathochromic shift. तो enones में जब यही दो functionalities अलग-अलग थे, they were not in conjugation. It was 170 and it was 290. So now since they are in conjugation, the enones, alpha beta unsaturated compounds. So this transition it goes from 170 to 210, and this transition it goes from 290 to 310 and 330 around. ये मैं range दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि it depends on कि दूसरा substituent भी कौन सा है, different factors. So that means in enones, when the bonds are put in conjugation, an ene and a carbonyl bond is put in conjugation, so there is always the bathochromic shift. So you have a bathochromic shift in the enones. So ये तो होगा in shortcut at this level the concept of ene and enones in the UV visible spectroscopy. I believe this will be useful. अब इसमें last topic जो आता है UV visible spectroscopy में, that is the calculation of, यानी theoretically कैसे calculate कर सकते हैं, calculation of absorption maximum in the molecules, और इसको हम बोलते हैं calculation of lambda max in molecules. यानी हमें एक्सपेरिमेंट पे नहीं जाना है, हम घर पे बैठ के विल अप्लाई सम रूल्स एंड विल कैलकुलेट थियोरेटिकली कि लैम्डा मैक्स मॉलिक्यूल में पॉसिबल क्या आ सकता है. सो उस रूल को हम बोलते हैं वुडवर्ड रूल, Woodward-Fieser rule. So that we'll take in the next class. So with that we'll end up the UV visible spectroscopy portion. So next class inshallah we have last topic, that is Woodward-Fieser rule or calculation of lambda maximum molecules.